সকলোকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পহলগামৰ ঘটনাক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতৰ মুছলমানে। কাইলৈ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰিব জুম্মা নামাজ। ইছলামৰ নাম লৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা সকলক ৰেহাই নিদিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। সৰ্বদলীয় বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া মুছলমানক এই আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। পহলগামৰ ঘটনাক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এনেদৰে ভাৰতৰ মুছলমানৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ভাৰতীয় মুছলমানক আহ্বান জনাইছে কাইলৈ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰক জুম্মাৰ নামাজ। শুকুৰবৰীয়া নামাজ কাইলৈ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰক বুলি আহ্বান জনাইছে। ইছলামৰ নাম লৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা সকলক ৰেহাই নিদিয়াৰ দাবী। আৰু সৰ্বদলীয় বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে মুছলমানক এই আহ্বান জনাইছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আৰু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দাবীক আদৰণি জনাইছে এতিয়া মুছলমান সমাজে। মুছলমান সমাজে এই আহ্বানক আদৰণি জনাইছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলামক বদনাম কৰিছে বুলি মন্তব্য মুছলমানৰ দল সংগঠনৰ। আৰু হিন্দু পৰ্যটকক হত্যা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু পহলগামৰ ঘটনাক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এনেদৰে ভাৰতৰ মুছলমানৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। কাইলৈ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰিব জুম্মাৰ নামাজ। শুকুৰবৰীয়া নামাজ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় মুছলমানে। ইছলামৰ নাম লৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা সকলক ৰেহাই নিদিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে। এই আহ্বান জনাইছে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানক সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বেই মুছলমানক আহ্বান জনাইছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। কৈছে যে আহক আমি সকলোৱে কলা বেজ পৰিধান কৰি শুকুৰবৰীয়া নামাজ অৰ্থাৎ জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰোঁ। আৰু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই যি দাবী, যি আহ্বান, সেই আহ্বানক এতিয়া সকলো মুছলমানেই আদৰণি জনাইছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মুছলমানক বা ইছলামক বদনাম কৰিছে বুলি মন্তব্য মুছলমান দল সংগঠনৰ। হিন্দু পৰ্যটকক হত্যা কৰা সকলো সন্ত্ৰাসবাদীকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। পহলগামৰ ঘটনাক লৈ এনেদৰে এতিয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় মুছলমান সমাজৰ। কাইলৈ জুম্মা নামাজ কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কোটি কোটি মুছলমানে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই আহ্বান জনাইছে দেশৰ মুছলমানক। মন্তব্য আছে, কি আহ্বান জনাইছিল মন্তব্য আগবঢ়াইছো। वैसे आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों के कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसादुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों के कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। আৰু এই আহ্বান জনাইছে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানক সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। পহলগামৰ যি ঘটনা তাৰ পাছতে এতিয়া ভাৰতীয় মুছলমানে লৈছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত। আৰু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে কাইলৈৰ দিনটোত জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰিবৰ বাবে মছজিদসমূহত দাৰগাহসমূহত মুছলমানে ভিৰ কৰিব। আৰু সেই আদায় কৰিবলৈ যাওঁতে জুম্মা নামাজ পঢ়িবলৈ যাওঁতেই এতিয়া কলা বেজ পৰিধান কৰি আদায় কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। সাংসদগৰাকীৰ যি আহ্বান, যি দাবী, সেই দাবীক বা আহ্বানক এতিয়া আদৰণি জনাইছে মুছলমান সমাজে। সৰ্বদলীয় বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে মুছলমানক আহ্বান জনাইছিল এই
আছাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু আছাদুদ্দিন দাবীৰ ওৱেইচিৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানক এতিয়া সকলো মুছলমানেই আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলামক বদনাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া মুছলমান দল সংগঠনে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া মুছলমান সমাজৰ ভাৰতীয় কোটি কোটি মুছলমানে বিশেষভাৱে কাইলৈ দিনটোত জুম্মা নামাজ আদায় কৰিবলৈ যাওঁতে কলা বেজ পৰিধান কৰি যাব বুলি এতিয়া আহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ সকলোকে কলা বেজ পৰিধান কৰি এই নাৰকীয় ঘটনাৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে পুনৰবাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं कई लोग अपनी जान जख्मी हैं अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं कई लोग अपनी जान जख्मी हैं